What is the most selfish one letter word? You know, everybody knows. Yeah, the most selfish one letter word is I. Am I right? Yes. Everything revolves around I. What does this I stands for? Expectations. मेरी अपेक्षाएं. My expectations. I should be treated like this. I should be loved like this. I should be respected like this. I should be seen like this. I should be hated like this. All expectations. All expectations. Lot of expectations. अपेक्षाओं की जिंदगी जी रहे हैं हम सब. We are all living a life of super high expectations, not just high expectations. Our life revolves around just I. My opinion, my desires, my likes, my dislikes. I like this, I don't like this. I hate this, I love this, I want this, I don't want this. I. कितना I भाई? क्या हम ऐसे खुश रह सकते हैं या रहेंगे? Do you think life would be happier when it revolves around I? From my childhood, we have learned to live like this. बचपन से हमने ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही जीना सीखा है. We have learned only to take, and everybody, everyone in the family, friend should fulfill my expectations. Everything has to be up to my expectation. मैं जब छोटा था तो खाना भी नहीं खाता था जब तक मेरी मम्मी मेरे पसंद का नहीं बनाती थी. Again, my expectations. Everything has to revolve around my expectations. मेरी अपेक्षाएं. एक 5 साल का बच्चा अपनी मम्मी के पास जाके बोलता है, मम्मा आई लव यू. तो मदर रिप्लाइज, बेटा आई लव यू टू. जब वो सेम लड़का 15 साल का हो जाता है और अपनी मम्मी के पास जाके सेम क्वेश्चन बोलता है, मामा आई लव यू. मम्मी बोलती है, बेटा कितने पैसे चाहिए बता. सेम लड़का जब 25 साल का हो जाता है, when he becomes of 25 years of age and goes to her mother and asks the same question, mama I love you. Mama says, किधर रहती है बता दो. The same boy when he becomes 40 years of age and goes to her mother and says, Mommy, I love you. Mother says, बोला था ना शादी मत कर उससे. When the same boy grew up at the age of 60 and goes to her mother and asks the same questions, Mommy, I love you. Mother says, मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करने वाली हूँ. Mother knows everything. Every time about me only. 18 साल में मेरा पैसा, 25 में गर्ल, in 40 years my wife, 60 years में मेरी प्रॉपर्टी. Everything about myself. लाइफ ही ऐसे जी है हमने. We are holding our options and expectations. Even religion is also not spared from this. Youngsters are not spared. Young men, young women are not spared. Girlfriends and boyfriends are not spared. Do you think religious people coming to temple are spared from this? I don't think so. When people come to temple, जब हम सब मंदिर जाते हैं, we keep on asking the God. सिर्फ हम मांगते रहते हैं, God, give me what I want. मुझे पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो. No one comes to say that God, I love you. और आपने मुझे जो भी दिया है, thanks for that. And I want to give you. John F. Kennedy, once in his public speaking, told that don't ask what the country can do for you. Ask what you can do for the country. In a very similar way, I am asking, don't ask what the God can do for you. Ask what you can do for the God. No one asks because
I is so big. नमस्कार दोस्तों, this is your host and दोस्त अमित शर्मा, an entrepreneur, coach, trainer and speaker. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, it means you are enjoying. So please subscribe and click the bell icon. I want to share a story from Ramayana, the world's biggest Nirahankari. Who was the biggest Nirahankari? Yes, you are right, guys. Our beloved Hanuman ji. बजरंग बली की जय हो। जब सीता जी को रावण हरण करके ले गया था और हनुमान जी उन्हें खोजते खोजते लंका पहुंच गए। इट्स अ लॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, but we will go in a short way. जब सीता माता के पास हनुमान जी पहुंचे तो रावण सीता माता को धमका रहा था। रावण वही था, बजरंग बली वही पत्तों के बीच में बैठकर सुन रहे थे। रावण ने माता को खूब धमकाया, 1 महीने का समय भी दिया, हाँ कर दो नहीं तो तलवार से गला काट दूंगा। बार बार अपनी तलवार निकाल रहा था और धमकाया जा रहा था और बजरंग बली वहीं पे बैठे हुए पेड़ पर सुन रहे थे। जब रावण चला गया तब हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिराई। सीता माता ने अंगूठी देखी। माता को समझ नहीं आया कि ये अंगूठी कहां से आई। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हनुमान जी ऊपर से कूदे। माँ ने पूछा, आप कौन हो? हनुमान जी रिप्लाइड, राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ मैं करना विधि। मैं राम जी का दूत हूँ और उनकी शपथ लेके कहता हूँ और परिचय मेरा कोई नहीं है। फील द आंसर which is very much related to our topic. See his charitra, his character. We have to learn a lot from him. He is very far from I. Listen to his reply. What he says कि मैं रामदूत हनुमान हूं और उन्हीं की आज्ञा से आया हूं। मेरा तो कोई वर्चस्व ही नहीं है। जो हो रहा है सब भगवान राम के कारण ही हो रहा है। और हम अगर होते तो क्या बोलते? हमारे जैसा आदमी अगर चाहता तो क्या बोलता? अरे माता जी, हमको नहीं जानते, मैं आ गया और कोई नहीं आ पाता। सुरसा को मार गिराया, लंकनी को मार गिराया, सबको मारते पीटते आ रहा हूं। मेरे को कम मत समझना। हमारे जैसा आदमी होता तो ऐसा ही बोलता। दिस इज द डिफरेंस। माई एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई दैट इवन व्हेन आई कम टू टेम्पल and ring the bell, I'm asking for something. When I'm donating some money, again I'm asking for something. We have lived a life for I will always be frustrating. People only don't exist in this world to fulfill your expectations. That's what you think? People are just existing in this world to fulfill your expectations? Sorry to say that. But they don't. Friends don't. Family don't. Relatives don't. सब अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए थोड़ा ना जन्म लिया है। नहीं, no. Don't ever give the control of how you feel to someone else. Do not allow anyone to control you from there. Control your TV, control your cars via remote control. Don't allow anybody to control your emotions from there. हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ही होगा। क्या होता है? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। So most selfish letter I, which stand for expectations, avoid it. I stated you or told you to avoid
the letter I. But how to do that? So, be realistic in your expectations. Try करने में कोई हर्ज नहीं है. But understand that not everyone will be able to fulfill your expectations. Avoid I by serving others, helping others. दूसरों की मदद करो. Because you know that if you want to be served, you are dependent on somebody. But if you want to serve, nobody can stop you. If you want to get respected, then you are dependent on somebody. But if you want to respect, then nobody can stop you from respecting. When you want to be loved, you may be loved or you may not be loved. It depends on the third party. But if you want to love, nobody can stop you from doing that. Who will stop you from doing that? Learn to begin your journey from I to you. More you want for yourself, you will remain frustrated. More you want to give will give you happiness. Hope you have understood what I meant to say. This is all for now, my dear friends. This is Amit Sharma. I am signing off. We'll catch you in my next video. Till then, take care of yourself, your parents, and your family members. Jai Hind. Goodbye. Tata. God bless you.